Hello everyone, my name is Ramasra Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I will tell you about diphthongs. In my previous lecture, I explained about pure vowels. So guys, as a small test, you all have to write these symbols once again, and after these symbols, you have to write words with phonetic symbols, right guys? And now today I will discuss you about diphthongs. So guys, what is diphthongs? Diphthongs means combination of two vowels, combination of these two pure vowels. So without learning these 12 vowels, you cannot understand easily diphthongs. So guys, I will tell you a trick to learn all 8 important diphthongs. How many diphthongs are there? 8. For that, you have to learn this trick. So guys, you have to make a page. आप एक पेज बनाएंगे. देखिए एक पेज बना हुआ है. Right. पेज इसका मतलब साउंड 1 डिफ्थोंग्स में. नाउ अब इस पेज में क्या बना हुआ है? 5 होम बने हैं. देखिए क्या बने हैं? होम बने हैं और कितने बने हैं? 5. क्लियर है? इस ट्रिक से क्या होगा? आपको सारे साउंड्स याद हो जाएंगे. नाउ गाइस, इसी में से एक आदमी निकलता है और क्या कहता है? इसी में से एक गरीब आदमी निकलता है और कहता है, नाउ आई हैव टू ज्वाइन the meeting of poor people near hairdresser. Now this is a sound number 4. This is join sound number 5, and this is sound number 6. This is sound number 8, 7, and this is sound number 8. So guys, with the help of this trick, we learned 8 sounds. Now let's go ahead and enjoy the pronunciation. Guys, the problem is this: maximum foreigners, they pronounce English with the help of this diphthongs. Diphthongs means combination of two sounds, and this diphthongs will make your sound soft and perfect. So out. Next one. Guys, now the sound is, the first one is A and E. Now you can see this is A and E. So guys, there are two sounds. How many sounds? There are two sounds. A. Repeat after me. A. A. So guys, this is the symbol of A. So guys, repeat after me. A. So guys, this is the word. Pronounce after me. Page. Guys, repeat after me. Page. Guys, repeat after me. Page. Second word is, this is what? Baby. Guys, repeat after me. Baby. Hello baby. बहुत सारे लोग कहते हैं हेलो बेबी, तो बेबी नहीं बोलना है. बहुत सारी लड़कियों का नाम बेबी होता है. नहीं, आपको क्या बोलना होगा? बेबी. क्या बोलना होगा? रिपीट आफ्टर मी. बेबी. हेलो बेबी. मतलब सॉफ्टनेस आएगी, भाषा में प्यार आएगा. नेक्स्ट वर्ड इज गाइस लेडी. दिस इज व्हाट? लेडी. व्हाट इज गाइस? रिपीट आफ्टर मी. लेडी. Lady. I met a lady. I met a lady. So guys, if you pronounce the sound many times, your pronunciation will be improved. So now guys, I will tell you A and E. So you can see this is symbol of A, E, A, E. ध्यान देना बेटे, जो आपका इससे पहले में आ था वो बड़ा आ था, वो बिग आ था, ये छोटा आ है. आ ई. तो साउंड इज, मेरे साथ बोलिए, आप बोलिए 5. रिपीट आफ्टर मी. 5. Again you repeat 5. So guys, it would be better, one thing I want to tell you, please take a screenshot and write each and everything whatever I have written on whiteboard, write on digital board. So after writing each and everything, you will understand well. Okay, all right, so follow the instruction please. Okay, this is what boliye my. So guys, repeat after me. My. Right? My name is Naki. My name is.
Don't speak like this. My name is, right? My name is. Hello everyone. My name is Ramasri Rai. इसमें बेटा सॉफ्टनेस है गाइज, इसमें सॉफ्टनेस है. हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज. इसमें सॉफ्टनेस नहीं है. राइट. सो गाइज, नाउ यू हैव टू स्पीक लाइक. रिपीट आफ्टर मी. लाइक. आई लाइक यू. माई नेम इज. अब आप देखिए ये जो वर्ड है आप जानते होंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज व्हाट गाइज. राइट. आई कहते हैं आई एम हैप्पी. नहीं भाई, आई नहीं होता है. आई. हेलो एवरीवन, आई एम हैप्पी. आई एम हैप्पी. माई लाइफ, योर लाइफ, राइट, एवरीवन्स लाइफ. सॉफ्टनेस आ रही है नहीं आ रही है? आई एम क्वाइट श्योर softness is coming in this language. Okay, now I'm quite sure this is the symbol of R and E. I'm quite sure आपने अगर रिपीट किया होगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा तो चीजें खूब समझ में आ रही होंगी. अब हम चलते हैं तीसरे साउंड की ओर. राइट. अ है और ऊ है. गाइज, दिस इज अ एंड दिस इज ऊ. यू कैन अंडरस्टैंड. So this is the sound a u. So guys, this will make your language perfect. Now this is what guys? Home. I'm going to my home. Home नहीं होता है, home. Right guys? This is show. Show. Right? Show. This is one more I'm going to write. This is a what? S-O. So. Right? So I'm going there. So I'm going to make you a perfect speaker. All right. Now this is what guys? Now. ना कि no. Are you happy? No sir. Are you happy? Yes sir. गलत है. Are you happy? Yes sir. Are you happy? No sir. जैसे आप देखिए बहुत सारे फॉरेनर्स बोलते हैं ना, हेलो सर. यस. आर यू ओके? नाउ. नाउ. अब देखिए क्या है? नाउ. अ एंड ऊ साउंड है. नाउ. हेलो. हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं. हेलो. दिस इज नॉट राइट. दिस इज रॉन्ग. राइट इज हेलो. हेलो एवरीवन. प्यार है इसमें. हेलो एवरीवन प्यार नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है. भाषा अगर सॉफ्ट नहीं है गाइस तो सुनने में आनंद ही नहीं आता है. हेलो. नाउ. राइट. सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. राइट गाइस. So next sound is a and u. This is symbol of a and u. Right? बोलिए मेरे साथ. Now. Guys, repeat after me. Now. Hello everyone. Now I'm going to teach you sound system. Now. क्या होता है भाई? ये गांव वाला now थोड़ी है. Now. Now I'm going to my house. Now I'm going to become a fluent speaker. Right guys? So guys, this is what it is guys. Cow. Hello everyone. I have a cow. I have a cow. अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? Cow. I have a cow. Do you have any cow? Yes. मैं वो भी बताऊंगा. Right? Okay. Now this is what? How. Hello everyone. How are you? अब आप किसी से कहेंगे How are you? What is this? How are you? लगता है उसको खा जाएंगे आप. हैं? How are you? प्यार से बोलिए आई एम फाइन. गाइज, ये यही साउंड है जो आपकी भाषा को परफेक्ट, यही साउंड है जो आपकी लैंग्वेज को स्मूथ एंड स्वीट बनाती है. राइट गाइज. ओके. नाउ दिस इज द साउंड ओ एंड ई. ओ ई. बोलो मेरे साथ आप. ओ ई. अगेन यू रिपीट. ओ ई. राइट. सो बोलो गाइज. जॉइन. रिपीट आफ्टर मी. जॉइन. ज्वाइन नहीं, जॉ इन. जॉ इन. जॉ इन. माउथ मूवमेंट देखिए मेरा. जॉइन. आई एम गोइंग टू जॉइन MMC. डू यू वांट टू जॉइन MMC? यस सर, आई वांट टू जॉइन MMC. ऑलराइट. नाउ टॉय. हेलो एवरीवन. आई एम गोइंग टू बाय अ टॉय. राइट. ओके. दिस इज व्हाट गाइस? बॉय. बॉय नहीं होता है, बॉय नहीं होता है, बॉय. बॉय. हेलो बॉय. हेलो बॉय. ये भी गलत है. बॉय. बॉय. राइट गाइज. नाउ नेक्स्ट साउंड इज अ एंड ऊ. राइट. पुअर. दिस इज व्हाट गाइज? रिपीट आफ्टर मी. पुअर. ही इज पुअर. पुअर नहीं होता है, पुअर. शी इज पुअर. ही इज पुअर. यू आर पुअर. आई एम पुअर.
Hello, nobody is poor, right? Okay, this is what guys, tour, tour, tour. And this is what guys, do. You are doer, I am doer, she's doer, he's doer. I think you are enjoying here. Right guys? Now this is what guys, e a. देखिए जब आप पढ़ेंगे तो e a, right? Near. Repeat after me. Near. Near नहीं होता है. Come and sit near me. गलत है. Come and sit near me. Hello dear. Dear नहीं. Hello dear. Come and sit near me. Right? So write dear. So repeat after me. Dear. Hello dear. Dear नहीं. Hello dear. Right? Now fear. My dear, don't fear. अब आप बताइए, लैंग्वेज अच्छा लग रहा है सुनने में ना? Hello dear, don't fear. Hello dear, don't fear. यहो सुन लीजिए. It's incorrect. Hello dear, don't fear. Don't fear. Right? I think the last sound is a. A. Right? बोलिए hair. बोलो guys. Hair. My hair is curly. Your hair is long. Her hair is black. I think you're enjoying care. So take care. Care your parents. Care your brother. Care your sister. Care your near and dear one. Okay? Alright. Dare. How dare you to come? Don't dare. Hello everyone. So guys, I'm quite sure guys, you write all these things and repeat after me. If I repeat once, you have to repeat thrice. Okay, 10 times. And if I repeat twice, then you have to repeat 20 times. And if I repeat 3 times, you have to repeat 30 times. Are you ready to do that? I'm quite sure. अब आप देख लीजिए आपके सारे साउंड इसमें आपके आ गए थे. देखिए आपके ये सारे साउंड देखिए. पेज, home, 5. Now I have to join the meeting of poor people near hairdresser. Guys, keep in your mind, without knowing sounds, you cannot be a perfect speaker. You cannot speak standard English. If you want to speak standard English, you need to know these sounds. Without knowing it, you cannot be a perfect speaker. Okay, let's go ahead. Alright guys, so I explained each and everything. Right, let's go ahead guys. So guys, now the task is what? You have to repeat all the sound more than 5 times. You have to write in your copy. After writing 5 times and repeating 5 to 10 times, then you will send me on my WhatsApp and I will see how hardworking you are. Okay? Alright, so guys, now after sound, I will teach you about tense. Which tense? That is future continuous tense. अब बताइए यूज कहाँ होता है? भविष्य में वो जा रहे होंगे, वो खा रहे होंगे, वो सो रहे होंगे, वो रो रहे होंगे. हम ऐसी कल्पनाएं करते हैं. जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, किसी को बहुत केयर करते हो, तो उसके एक एक पल का ध्यान रखते हो. राइट? कि वो सो रहा होगा, वो सो रही होगी, वो गा रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे. एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, छोटी सी स्टोरी. मान लीजिए कि आपके घर में या आपके किसी बहुत खास व्यक्ति की शादी पड़ी हो, घर में शादी पड़ी हो, ब्रदर की, सिस्टर की या ब्रदर की शादी पड़ी हो और आप किसी कारण से न जा पाए हो. राइट? कोई एग्जाम है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या सोचेंगे? अरे रिश्तेदार मेरे जुट रहे होंगे, लोग मुझे याद कर रहे हैं. और आपका कोई बहुत खास है ना, तो बहुत ज्यादा याद आएगी. समझ रहे होंगे आप लोग. राइट? तो इन दैट केस आई विल टेल यू कि आप क्या सोचेंगे? बारात सज रही होगी, गाड़ी सज रहा होगा. राइट? लोग शादी में जा रहे होंगे. राइट? गाड़ी में बैठ रहे होंगे. बारात द्वारचार लग रहा होगा, दूल्हा है ना द्वारचार लग रहा होगा. लोग डांस कर रहे होंगे, लोग खा रहे होंगे, लोग एंजॉय कर रहे हैं. बाकी जो आप लोग करते हैं वो कर रहे होंगे. आई एम राइट? वॉट एवर. तो हम कल्पनाएं ही तो करते हैं ना. तो उसी तरीके से ये सेंटेंस होता है. पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. will be and shall be. बट इन स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी में हम will be का ही प्रयोग करते हैं. राइट? अब क्वेश्चन आंसर भी समझ लेते हैं हम. जैसे
You will be taking class or not. Hello everyone. You will be taking class tomorrow or not. तो आप क्या कहेंगे? Yes, yes, sir. I'll be taking class tomorrow. Yes, yes, sir. I'll be taking class tomorrow. No, no, I will not be taking class tomorrow. Sorry, sir. I won't be taking class tomorrow. Okay? Now, you have to practice like this. Now, you will be dancing or not. मान लीजिए कल शादी है, आपका बर्थडे है, किसी फ्रेंड की शादी, तब यही पूछेंगे, हेलो एवरीवन, आई थिंक यू विल बी डांसिंग टुमारो और नॉट. आप क्या कहेंगे? यस यस आई विल बी डांसिंग. या राइट. ओके. यस यस आई विल बी डांसिंग. अब नहीं तो नो नो आई विल नॉट बी डांसिंग, आई विल बी एंजॉयिंग इन डिफरेंट वे. राइट. नाउ दिस इज व्हाट and they will be coming or not, guys. ये they होना चाहिए. I'm sorry, third is misprinting here. They will be coming or not? Yes, yes, they will be coming. No, no, they will not be coming. Right? She will be cooking or not? Hello everyone. She will be cooking or not? आप क्या कहेंगे? Yes, yes, she will be cooking. No, no, she will not be cooking. All right. Now they will be helping you or not? They will be helping you or not? Yes, yes, they will be helping you. Yes, yes, they will be helping you. No, no, they will not be helping you. You will be jumping or not? Yes, sir, I'll be jumping. Just a word, वैसा expression. Yes, yes, I will be jumping. No, no, I will not be jumping. I'll be dancing, right? Like that. Okay, so now next. So guys, lots of questions are there. Like if I, what will be your family members doing at this time? मैं अगर आपसे पूछूं आपके घर के लोग क्या कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि my father will be taking tea, my mother will be preparing dinner, my sister will be studying, right? My brother will be watching TV. ऐसे ही आपको अपने फैमिली के बारे में लिख के मुझे वो सब करना है. Ready to do that, guys? Okay. Now, what will be your friend doing? Friend में समझ रहे होंगे आप लोग. What will be your friend doing? Sir, my friend will be remembering me. My friend will be doing some tasks. My friend will be studying. My friend will be reading. My friend will be dancing. कुछ भी कह दो. No problem. What will be actor, actresses, leaders doing? Up, Amitabh Bachchan will be talking to Jaya Bachchan, right? And the Karisma Kapoor will be talking to her husband. कुछ भी बना दो आप, 20-25 सेंटेंस बना करके आपको मुझे वो सब करना है, right guys? Now, what will the businessman doing? What will be leaders doing? So guys, you have to work sincerely. So guys, if you really liked something, if you really enjoyed, so please and please pass your valuable comments, right? And guys, if you really like this video, please like this video. And if you did not like this video, please dislike this video, but you must give your right vote. And guys, please share this video to your friends, to your near and dear one. And one thing more, then you subscribe the channel if you have not subscribed yet. Okay, so you will be notified with our latest videos. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all and jai hind all. Right.